हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप एक सोल्डरिंग आयरन स्टैंड कैसे बना सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन स्टैंड हमारे इसलिए काम में आता है ताकि अगर हम सोल्डरिंग आयरन को साइड पर रख देते हैं तो कोई चीज़ जल ना जाए, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को जलने से बचा सकें। तो दोस्तों, ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन स्टैंड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें एक लकड़ी का पीस चाहिए होगा, या आप एक नॉर्मल साइज़ का पीस ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक नट चाहिए होगा, यानी कि पेज जिसे बोलते हैं आप। उसके बाद हमें एक ये प्लास्टिक का पीस चाहिए होगा, ये हम इसको स्टैंड को सीधा रखने में मदद करेंगे। और आखिर में हमें एक सिल्वर की वायर चाहिए होगी। तो दोस्तों, ये वायर थोड़ी सी आप मजबूत लीजिएगा ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वायर को टर्न कर लेंगे, इसके आप तकरीबन यहाँ तक राउंड कर लेंगे और फिर बाकी इसको जो बच जाएगी वो इसको काट लेंगे। तो चलिए पहले इसको टर्न कर लेते हैं। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh,
और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।